Okay, fine. Let us start. Amna, Aqib, and Rishita, I have started the focus mode on. Can you please turn your cameras on also? Yeah, Aqib, waiting for Rishita and Amna. By the way, Amna, am I audible? Amna? Amna, you're not responding like from the starting of the class. I don't know whether you can hear me or not. Message me on the chat if you can hear me. I guess you cannot turn the video on maybe. Okay. What happened to your audio and video? You can't turn your mic on, cameras on. अच्छा, you're having a throat pain. Okay, fine. No problem. ठीक है. Guys, please write the resonance. We discussed the inductive effect plus I minus I in some of the application. Now write the topic resonance. है ना? सब कुछ कर लिया था ना? Plus I minus I. Plus I effect, minus I effect, acidic strength. है ना? We did a question also. Now write resonance. So what you will remember that resonance is shifting of pi electron or lone pair electron within a compound. Within a compound. ठीक है. एक इसका हम एग्जांपल आपको देते हैं एंड आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस में एक्चुअली होता क्या है. सो टेक एग्जांपल ऑफ बेंजीन. Now in benzene we have alternate double and single bonds like this. Now each of these carbon atom will also have a hydrogen atom. ठीक है. Now if you look at the hybridization of each carbon atom, then count the number of sigma bonds. So here we have carbon atom, 1 sigma, 1 sigma, 2 sigma, and 3 sigma bonds. It is having 3 sigma bond. That means it is sp2 hybridized. और ये जो pi bond बन रहा है, that is by the lateral overlap of p orbitals, है ना? Parallel p orbitals होंगे इस तरह से. And इनके overlapping से क्या बन रहा होगा? Pi bond. Yes or no, please tell me, guys. You remember, ना? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Now let us just look at the pi bonds, है ना? We will ignore the sigma bonds. I will make the okay, please see. There will be p orbital here. 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 And here also. Okay. Now, as you can see, if the electron is in this p orbital, nothing is stopping the electron. And please remember, electron, it is what? Electron is wave in nature, right? So what will happen? All of the p orbitals are parallel to each other. So electron, rather than just limiting itself to these two, and these two, rather than limiting itself to only two carbon atoms, what the pi electrons, these are charges, and charges jitna hi zyada delocalized hoga, if it is spread out, it will be more stable.
That is why these electrons, they start revolving in all of these p orbitals. So here we have only 6 electrons. Here we have 3 bonds, now 6 electrons, but these 6 electrons are revolving and they are, all of these p orbitals are overlapping with each other. And that is why this is known as the resonance. अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? इससे फर्क ये पड़ने वाला है that when you make this particular structure, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 1 and 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, बट एक्चुअली में ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में. Why? Double bond तो तब होता है ना when two p orbitals were overlapping with each other. But right now what is happening? All the 6 p orbitals are overlapping with each other. That is why we always have partial double bond in the resonating structures. है ना, जो आपके पास असल जो structure है in the resonance hybrid, we will be having all these bonds. They are neither double nor single. All of them are having partial double bond character. And why is that? Because electrons are not concise, they are not localized in one or two carbon atoms, between two carbon atoms. Rather, what it is happening, they are revolving around all the 6 carbon atoms and they are shared by all the 6 carbon atoms. So this delocalization of electron, why in the parallel p orbitals, this is known as resonance. All of you guys make sense? Yes or no? Please tell me. थोड़ा समझ में आया रेजोनेंस में हो क्या रहा है? ठीक है, ये तो आपको ऐसे कंसेप्चुअली समझना है रेजोनेंस में हो क्या रहा है. जो एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव also seen that resonance में क्या होता है when a structure cannot be explained by only one Lewis structure, we have to make multiple Lewis structure to explain the properties of a particular compound. तो वहां पे resonance का यूज करते हैं. And resonating structure is not a new word for you guys, so please write resonating structures. Sir, first you have to draw this. First you draw these two and then you will write. Okay. Okay, sir. Are hypothetical and it is intermolecular phenomena. Raise your hand once you're done writing till here. Khadija, I'm waiting for you. Okay, fine. All right, next. Contribution of all resonating structure are known as
resonance hybrid structure. Okay, now there are 2 points regarding tips for इसको छोड़ दीजिए, टिप्स छोड़ दीजिए, बाद में इसको लिखेंगे, पहले लिखिए कंडीशंस फॉर रेजोनेंस. Conditions for resonance. So there are 5 basic conditions. If you identify any of these conditions, तो वहां पे रेजोनेंस होगा. ठीक है, you will have resonance there. पहला है, if you have a pi bond, then sigma bond, and then you have a positive charge. So in a molecule, you will see something like this: A double bond B, single bond C, and C has a positive charge. Then there will be a resonance. Sorry, guys. Pi, then sigma bond, and then you have lone pair electrons. It will be negative charge also, no? Lone pair or negative charge. A double bond B, single bond C. C has a lone pair, or you can see this in this way: A double bond B, single bond with C and a negative charge. Third is pi, sigma, and then you have a free radical. Okay, free radical. ऐसे लिख दीजिए, free radical लिख दीजिए, otherwise you will not understand. A double bond B, single bond C, and C has a free radical like this. Fourth condition is if you have pi and then sigma, and then you are going to have another pi bond. So it will be A double bond B, single bond C, and then double bond D. The fifth condition is when you have a lone pair or a negative charge followed by sigma, and then this sigma is bonded to a positively charged. So atom A के पास क्या है? Lone pair, then there is a sigma bond, and then we have B atom with a positive charge. Or it can be something like this: A with a negative charge sigma bond and B with a positive charge. So these are the conditions for resonance. If you identify any one of these conditions, then वहां पे resonance होगा. Raise your hand once you're done writing. Rishita, waiting for you. All of you guys done? Khadija, please raise your hand if you're done. Khadija, are you done? Oh, Khadija and Khadija, both of you guys are here. Let me know if you have not done. Right, next. Identify the case of resonance in following.
Identify the case of resonance in following. ठीक. चलिए, 5 मिनट है आपके पास. अच्छा, एक कोई सवाल हम कर दे क्या आप लोगों के लिए? टेल मी गाइस, should I do one of these questions for you? Yes, sir. Yes, which one? Tell me. J or K, anyone? J, K, anyone? Can you identify what is C6H5? Wherever you see C6H5, now please remember that it is a benzene ring with a substituent. C6H6 is benzene ring. उसमें आप एक substituent लगा दीजिएगा तो C लगा के substituent. So you will have benzene ring, and here you have CH2 positive, right? So you can see that here we are having a double bond B, single bond C, and C has a positive charge. Correct. So यहाँ पे आपके पास क्या condition आ गया? A double bond B, single bond C, C with a positive charge, or you can say it is pi sigma positive. There is another thing that you can see here. We have A double bond B, single bond C, and then double bond D. यहाँ पे एक और condition है आपके पास, that is pi sigma pi वाला. So this is what you have to do. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. कीजिए, स्टार्ट हो जाइए. You guys will send me answer in 3 minutes. फिर वापस से आपको कम टाइम देंगे, ठीक है ना? 3 मिनट में के अंदर you will send me whatever you have done.
So I didn't get how to do this properly. Acha. Tell me, what should I explain? Which question? So can you explain J again? J again. You see the conditions of resonance, right? Yes, sir. हाँ तो उस कंडीशन में आई मीन इज देयर एनी पार्ट व्हिच इज सैटिस्फाइंग दैट एनी ऑफ दोस कंडीशंस जे वाले सवाल में पहले तो जे वाले सवाल में C6H5 इज बेंजीन रिंग ये समझ में आया Yes, sir. नाउ कैन यू सी दैट अगेन नाउ कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है आपको जे वाले केस में द जे क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 कंडीशंस दैट वी आर हैविंग Pi, sigma pi? पाई सिग्मा पाई दिख रहा है उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा पाई सिग्मा पाई तो दिख गया चलिए ठीक है पाई सिग्मा पाई आपको दिखा guys please send your answers Um, whatever you have done till now हाँ रशिदा tell me pi sigma positive? हाँ बस यही करना है Oh, okay, sir. ओके guys please send me whatever you have done आकिब आमना खदीजा yes amna correct send the answer on my WhatsApp okay whatever you have done till now guys please I will give you more time हमको बस ये देखना है, जो भी किया है आपने ना वो सही किया है क्या नहीं किया रिश्ता not you you have just started ना not you रिश्ता I'm talking about आकिब खदीजा खुदेजा आकिब has sent the answer अच्छा ए नहीं कर पाए आप ठीक है बी करेक्ट वेरी गुड यस करेक्ट इतना ही कर पाए आप you have not written the Yes, question or what you did not write the question no, with me I wrote, sir. फिर भी बहुत टाइम और कीजिए ठीक है यहाँ तक ठीक है बाकी कीजिए Yes, sir. Done. दूसरा आमना has sent ठीक है आमना डू दी अदर्स ठीक है जो आता है ना जो आ रहा है आपको करते जाइए जो नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए ठीक है डोंट वेट मतलब इफ यू कैन आइडेंटिफाई एट वन ग्लांस देन यू राइट दैट डाउन
If you cannot identify in one glance, just move on. Okay, quick should be the approach, है ना? Your approach should be quick. बहुत ज़्यादा time नहीं लगाना भाई, because you are just learning about it, है ना? So when there are many things that you are going to learn, there are many new things that you are going to learn in these questions also. ठीक है? तो बहुत ज़्यादा time मत लगाइएगा. ठीक है, guys, one more minute and then you will send me whatever you have done till now. Guys, please send me whatever you have done. आकिब, खदीजा, आमना, रिशिता, कुछ if something is left, don't worry ना, भेजिए आप हमको लिखे, ठीक है ना? प्लीज सेंड मी क्विकली. जो आपको नहीं आ रहा है ना, वो नहीं आएगा आपको, ठीक है? उस पर बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिए एंड सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन. Okay, has sent. Yes, okay, first one is correct. C is correct. D is sorry, D तो आपने नहीं किया. E is not correct. F is correct. Again, G is not correct. H नहीं किया आपने. Okay. I may have identified wrongly. L is fine. Yes.
Rishita, Amna, आप भी भेजें. Khadija and Khadija, I don't know guys, you have not sent any one of the answers also. अरे बाप रे, ऋषिता बड़ा ही अपने से गंदे से किया है, लेकिन Sir, what about the last one? करेंगे ना भाई, सब करेंगे आके, डोंट वरी. अरे सब करेंगे, सब करेंगे. ठीक है, आधा है लेकिन आपका वाला. मतलब जितना Last one. आपको दिखा हाँ. उतना आपने किया. हाँ हाँ, जितना आपको दिखा उतना किया, उसमें कुछ और भी है. Okay, सही sir. सही सही. सही. ओके. एफ में क्या लिखा है आपने? शिता, व्हाट हैव यू रिटन एफ? पाई सिग्मा. Pi sigma. Sir, I thought the symbol was 4. व्हाट? I tried to write negative, but what's that symbol? नेगेटिव. ये In the क्या है ये? second one, ये क्या है pi ये? sigma. लोन पेयर, अंडर पाई, ये तो देख लो लोन पेयर. एलपी Uh, एलपी लोन पेयर. yeah, sir, I thought it was a ये symbol. क्या, आपको कुछ नया साइन लगा आपको कुछ? Sir. अच्छा. ओके, अच्छा, लेट मी सी. ठीक है, फाइन. जहां तक कि आपने कुछ ज्यादा हैवी मिस्टेक्स नहीं है. अच्छा चलिए, ठीक है. ओके, लेट अस सी नाउ. Okay, here we have pi sigma pi. I hope all of you can see that. Here we have pi sigma and sorry. Here we have pi sigma and then positive. ये आसान है सारे. pi sigma. Here we have, देखिए, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखा, तो जरा देखिए. A double bond. A double bond B single bond C पे पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो pi sigma पॉजिटिव है ये. Okay, so this is pi sigma positive. Now, for the E structure, you have to remember that oxygen के पास valence electron होते हैं कितने? Valence electron is equal to 6. The bonds that it is making, it is equal to 2. Remaining electron is equal to 4. That means 2 lone pairs. So oxygen will have 2 lone pairs. तो एक तो आप लोग को हमेशा दिखना चाहिए in benzene is that you are having A double bond B single bond C and double bond D. The other thing that you should also see is that there is A double bond B, single bond C, and C has a lone pair electron. So यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. There is pi sigma lone pair and you have pi sigma pi. Here also, when nitrogen is making 3 bonds, इसके पास एक lone pair होता है. That is why it will be pi sigma lone pair. Here also oxygen will be having lone pair. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Pi sigma lone pair. Here you will be having negative charge and then sigma and then positive charge, है ना? तो वही lone pair sigma positive वाला है. Here also, because it is benzene, तो pi sigma pi तो होगा ही. And you can also see we have pi bond, sigma bond, and then free radical. So you'll have pi sigma free radical. This will be pi sigma negative and pi sigma pi will be there because we have benzene. ये तो pi sigma pi यहाँ पे होगा ही because we have benzene ring. Now you have to understand the CHO structure is like this. This is not a new information for you that it is C double bond O. It is C double bond O, and here you are having hydrogen. You can see that here we are having a condition of resonance that is A double bond B single bond C, and then you are having double bond D, है ना? यहाँ पे आपके पास एक और कंडीशन that is pi sigma pi. एक तो ऑक्सीजन वाला pi sigma pi और एक बेंजीन रिंग वाला. Make sense everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. If you want me to explain any one of them once more, please let me know, or else you can copy this down. Amna, Khadija, Khadija, Rashita. No, sir, I got it. You got it all? ठीक है. Please raise your hand if you are done writing. जहाँ जो आपने नहीं किया उसको complete कर लीजिए, and then raise your hand if you are done writing.
waiting for Rishita, Khudeja, Khadija. Khudeja, just waiting for you now. Khudeja, waiting for you. You guys can lower your hand. After this, you write tips for writing resonating structures. We have seen how to identify the condition for resonance, and now we need to understand how to write the resonating structures. Okay, tips for writing resonating structures. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए. नंबर 1 पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच साइट to electron poor site. Electron rich site to electron poor site. ठीक है. Now, what are the electron rich site? Wait a second. And electron poor sites. ठीक है, ध्यान रखिएगा. See, the most electron rich site will be an atom which is having negative charge. Then an atom which is having lone pair electron. After that, अच्छा lone pair electron में देखिए, oxygen atom which is having 2 bonds उसके पास lone pair होगा. Nitrogen atom when it is having 3 bonds, then it will be having 1 lone pair electron. And when you have any halogen atom, fluorine, chlorine, bromine पे X से denote करते हैं, it will have 3 lone pair electrons when it is having only 1 bond. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. These are the atoms that will be majority of the times will be having lone pair electrons. After lone pair electron, there will be pi bond, and then sigma bond. These are the electron rich side. But please understand, this is in priority. है ना, सबसे ज्यादा कौन सा है? First is negative charge, second third में pi, और fourth में sigma. Now, when we talk about electron poor site में positive charge, then vacant orbital such as if you are having carbon atom with 3 bonds, है ना, then also there is 7 electrons only. You have boron atom, but mostly you will be seeing carbon only, but I'm also giving you some other example. Aluminium maybe, okay, aluminium, or you can have like carbon with a positive charge, right? So all of these are examples of
vacant orbital. Now, we can also have more electronegative element. More electronegative. Now, usually more electronegative atom will be oxygen or it will be nitrogen or something like that. All of these things, they have more electrons. But if the electronegative element or electronegative atom, it is asking for electron, it is asking for electron, तब तो electron poor ही हो जाएगा ना. And it will be the case when more electronegative atom attached with carbon via okay, so this is a case in which the more electronegative element will take the electron, and if it is taking the electron, it is what? It is electron poor. Please write this down. So this is the first tip that you have to remember. Electron moves from electron rich to electron poor sides. I hope you have written this. Now, the second tip that you have to always remember is that never break a sigma bond while making a resonating structure. Sigma bond kabhi bhi nahi to. The atom will be still the same, only the pi electron or the pi bond is going to move. Never break the octet rule. 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास, ठीक है, स्पेशली दीज कंपाउंड्स. Write this down, raise your hand once you're done writing. Guys, raise your hand if you're done writing quickly. Waiting for Khadija and Rishita. Khadija, just waiting for you now. Okay. Khadija, still writing? Okay, Khadija is done. Okay. Guys, please lower your hand and see. We'll understand the case 1. In case 1, we have pi, then sigma, and then positive charge. The condition is A double bond B, single bond C, and C is going to have a positive charge. Okay. So I will explain by this particular example. अगर आपके पास A double bond B
C and C पे positive charge है. So the most electron rich side that you can see is the pi bond here, and the pi bond will move towards the positive charge and it will neutralize the positive charge. The resonating structure will be something like this. Double bond has shifted to BC, and C will be neutralized because it was having positive charge. It got an electron. Atom A is giving electron, that is why it will be having a positive charge like this. Okay, so this is the simple case that we are going to see. यहाँ पे है किसका of a particular compound which is organic compound. So white कर देते हैं and let me keep this as pink itself. ठीक है. So please see, if you have CH2 doubly bonded with CH, singly bonded with CH2, and C is having a positive charge here. Now in this particular case, this pi bond is towards the positive charge, and आपके पास CH2 single bond CH, double bond CH2, and there will be a positive charge here. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए. Let us suppose you are having that was the easiest case, है ना? See here, don't write anything, please see. Now, as you can see, that we have pi sigma positive charge condition here, right? What do we have? Pi sigma positive condition here. So this pi will move here, and the next resonating structure that you're going to see is there is a double bond here as it is. Resonance आपको करना है, you will only focus there and you will deal with only one condition at a time. ऐसा नहीं कि pi sigma pi दिख गया तो pi sigma pi करने लगे, ठीक है? So if you have seen a positive charge, you will focus on the positive charges. Charges पे पहले focus करेंगे, है ना? That is why when you see here, in these cases, I have written for positive negative free radical first, है ना? So these are the important cases. Wherever you see these cases, इन पे पहले focus करना है आपको. Okay, please see here now. As it moves, we'll get a double bond here, and there will be a positive charge on this carbon atom. Okay, now let us try to analyze why this carbon atom is having a positive charge. Please see. Now, if I take this case, here we are having one hydrogen atom, here we are having one hydrogen atom, and here we are having two hydrogen atoms, है ना? यहाँ पे आपके पास there are two hydrogen atoms here. Now, this particular carbon atom, it was having three bonds. That means how many electrons? 6 electrons. It got an electron, that is why the positive charge has been neutralized. If I look at this carbon atom here, this carbon atom is having 4 bonds. कितने bond है इसके पास? 4 bonds. And if you look at this carbon atom here, here also it is having how many bonds? 4 bonds. But when you look at this carbon atom, in this first structure it is having 4 bonds, but in the second structure it is having only एक यहाँ पे एक hydrogen होगा बस 3 bonds. That means it has lost an electron. That is why this particular carbon atom is getting a positive charge. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Now, once you make a resonating structure, you can see that there is a condition once again. We have a double bond B, single bond C, and there is a positive charge. So this pi bond will also move, and you will get another resonating structure, which will look something like this. Double bond, and positive charge. Now, out of these 3 structures will be contributing towards the resonance hybrid. Please don't write and listen here. For the resonance hybrid structure, you will make only the sigma bonds. And we have how many carbon atoms? We have 1, 2, 3, 4, and 5 carbon atoms. Look at the first carbon atom. Tell me, first carbon atom, is it having any charge in any one of the resonating structure? क्या पहले कार्बन पे किसी भी resonating structure में charge है? Yes, sir. है ना? So the first carbon will get a delta positive charge because it is sometimes neutral, sometimes charged. What about the second carbon atom? Is it ever having a positive charge, negative charge? Yeah, it is always neutral. No, sir. It is always neutral. So second carbon will not be having any charge. What about the third carbon atom? बाकी लोग नहीं आंसर करेंगे. हाँ, Rishita, Khadija, and Khudeja. Third carbon atom, is it always neutral or sometimes positive? Sometimes positive. Sometimes positive. तो क्या charge आ जाएगा? Delta positive. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. What about the fourth carbon atom? Always neutral or sometimes positive? Always neutral.
Okay, so no charge. What about the fifth carbon atom? Bolo Delta bhai. positive. Delta Sometimes positive. delta positive. Now let us look at the first and second bond. So see, the first carbon, second carbon is having double bond here, but single bond here. That means the first and second carbon atom will be having partial double bond character. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Okay. The second and third carbon atom is it is having single bond here, but double bond here. So second and third carbon atom are also partial double bond character. Correct? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. And I hope you can see that for all of the other carbon atoms also, and all of the other bonds also. Right? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now see, the important thing is that if we were given only this structure, then you may be able to say that okay, यहाँ पे और यहाँ पे positive charge है. But without resonating structures, you will not be able to see that there is a positive charge on this third carbon atom also. That is why resonating structure, they give you some extra information. Can all of you guys see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Right? ठीक है. चलिए, please write this down. Raise your hand once you're done writing. ठीक है. चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. सी हियर गाइस. ठीक है. देखिए, आपको फोकस अपना नहीं बिगाड़ना है. ठीक है ना. मेन थिंग इज फोकसिंग ऑन द exact sites what is useful for you. So what you can guys see, please don't write anything now. Okay, see here, you can see A double bond B, single bond C, and C is having a positive charge. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me this fragment. इतना दिख Yes, रहा है आप sir. लोगों को, है ना? ठीक है. So please see here guys, आपको बस क्या करना है यहाँ पे. I hope you can draw the first resonating structure. You can move the pi bond like this. You will be able to draw the next resonating structure. Yes or no? Please tell me guys. Yes, Yes, sir. Rishita. Yes, sir. ठीक है. नाउ सी, इनको कुछ नहीं छेड़ना. ये जैसे हैं वैसे ही बनाइएगा बिल्कुल. यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए. आप यहाँ पे गलती कर दीजिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है. मिस्टेक्स कैन हैपन, बट जहां जरूरत नहीं है उन चीजों को छेड़ना बिल्कुल नहीं है. ठीक है ना. प्लीज डोंट डू एनीथिंग हियर. राइट देम एज इट इज.
द पाई बॉन्ड एंड द पॉजिटिव चार्ज, वहां जहां पे आपको फोकस करना है वहां पे फोकस करके यू ट्राई टू मूव द पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए। Rishita, are you watching the match? Yes, Rishita. Today I had a lot of homework today, so I didn't. अच्छा अच्छा, ओके। हाँ फिर इंडिया के बस कुछ ही गेम बचे, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। होपफुली दे डोंट चोक। Afghanistan versus Australia. So what? अच्छा, you thought about Australia and Afghanistan? Yes, sir. Which one are you saying? नहीं नहीं, I was saying that India just has three more. Mainly like Netherlands game is there, but other than that, semi-final, final. Australia game is also getting interesting because Maxwell is hitting. Yeah. Send the answer ना, whatever you have drawn. भेजिए, तब तुमको पता चलेगा सही बनाया नहीं बनाया आपने। Very good, Akib. Waiting for others. What about others? Okay, Amna, Amna, Khadija, Rishita, Khudeja. नो, आमना देखिए आपने मिस्टेक कर दिया, वहां पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, फिर से बनाइए। वेयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज? आमना, प्लीज सी द प्रीवियस स्ट्रक्चर्स, देन यू विल अंडरस्टैंड द पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा। प्लीज टेल मी इफ यू अंडरस्टूड द मिस्टेक, yes or no in the chat, please. Amna, Sir, Amna, can you tell me whether please, who is it? Arishita, No, sir, can you please show this? do this one.
नहीं यार, कुछ तो मतलब कुछ तो करिए ना, ये आसान है, इट्स नॉट टफ। नहीं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू, आई मीन यूज योर हैंड्स, डू सम मिस्टेक ऑल्सो ऋषिता। बात समझ में आ रही है ऋषिता? यस सर। है ना? आप देखिए पुराने स्ट्रक्चर्स आपने बनाया है ना, यू मेड द प्रीवियस स्ट्रक्चर्स राइट। तो आप देखिए पाई बॉन्ड जो है मूव, देखिए इसको तो ऐसे ही रखना है यहाँ पे। सेकंड स्टेप में देखिए ऐसे ही था, उसमें कुछ नहीं किया हमने। पाई बॉन्ड जब मूव कर रहा है तो किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? आमना, नाउ यू फोकस हियर ना। इतना ये पार्ट तो सेम है ना इतना। इट्स द सेम थिंग, यहां से यहां तक जो है, और यहां से यहां तक जो है, दीज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम। यस और नो आमना, टेल मी। यस आमना, नाउ यू ट्राई। यू गॉट योर मिस्टेक नाउ, टेल मी आमना, कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? सी द पाई बॉन्ड इज नॉट हैविंग, ठीक है, द कार्बन एटम विच इज हैविंग पाई बॉन्ड। हाँ गॉट इट ना, ठीक है। सो ऋषिता यू डू सम मिस्टेक, ठीक है, वो मिस्टेक से ही फिर आप समझिएगा। हम देखिए दो बार तो हमने बनाया ना स्ट्रक्चर, टेल मी ऋषिता। यस सर। आई टुक टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ना। तीसरा एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए कम से कम, तभी होगा, ओके? ऋषिता, व्हाट हैपेंड? इतना टाइम लगाएंगे आप? यस ऋषिता। सर इट विल बी CH2 नहीं नहीं, and आप C. ड्राइंग कीजिए, नहीं 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 नहीं, आप ड्राइंग कीजिए, आप बनाइए उसके बाद, ठीक है? until unless you will, this is a hand skill thing, ठीक है ना? You have to move, you have to give the arrows and move the bond, and then think about the positive charge also, ठीक है? It's a hand skill, वो आपको करना ही पड़ेगा। If you are just going to look and copy तो वो नहीं आएगा उतने अच्छे से। ऋषिता जल्दी आंसर भेजिए, आप इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एक स्ट्रक्चर आके क्या, अच्छा वैसे तो और आगे बनना है, लेकिन भाई अभी हम, ऋषिता, खदीजा और खुदिया कुछ तो भेज नहीं रही है, आई एम नॉट आस्किंग देम। हुआ ऋषिता? I don't know for sure, sir. I'll try to अरे यार send. आप भेजो ना, भेजो करके, जो भी आपको समझ में आ रहा है भेजिए तो सही, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था आपको।
Oh my god, my internet is not. अरे why you have opened the structure यार? ये तो हमको समझ नहीं आया। इसको हमने बोला एज इट इज रखने के लिए, आपने उसमें इतना चेंजेस कर दिया। रशिता, इसको तो हमने ऐसे ही Yes. रखने बोला था ना, तो आपने उसको चेंज क्यों किया? जो चीज हमने कहा था आपने वही, मतलब इसको तो आपको ऐसे ही रखना था। हाउ कैन यू, एक चीज हमने सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक करने के लिए आपने सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक किया है। ये हम तो इतनी दफा बोल रहे हैं इसको ऐसे ही रखना है आपको। आप ये बताइए आपने ये यहाँ पे क्यों चेंजेस किए? हम्म। So I don't know. व्हाट? I got confused. So ठीक है, नहीं कर, ठीक है, बट हमने तो बोला था ना यहाँ पे करिएगा, जो कुछ करना है इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी CH2 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। लाइक दिस वाज नॉट वेरी टफ। लेकिन मतलब जो मिस्टेक आपने की दैट वाज नॉट, आई मीन इट वाज, पता नहीं, डेल्टा पॉजिटिव आप डाल रहे हैं कहीं, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ यहाँ पे तो हमने कहीं पे भी डेल्टा पॉजिटिव नहीं किया है। वी आर मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स राइट नाउ ना। ठीक है, खैर नेक्स्ट कीजिए आप। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी एंड पॉजिटिव चार्ज सी। अब इसको कुछ नहीं छेड़ना है प्लीज, ठीक है ना? डोंट डिस्टर्ब दिस पार्ट, दिस विल बी एज इट इज। ओके ऋषिता। yes, sir. आकिब, आमना। आमना, आपने मिस्टेक किया था, फिर वो आपने भेजा नहीं करेक्ट करके। ओके ऋषिता, सॉरी आमना, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ आमना, you forgot the positive charge. Akib and Rishita waiting for you guys. Send the answers. Just to update you guys, Maxwell hit 201 runs. Double century.
Akib and Rishita waiting for your answers by the way. ऋषिता हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ ऋषिता. हो रहा है सर. सॉरी. हो रहा है सर. हो रहा है. अच्छा okay. ठीक है, वो करेक्ट आकिब. ऋषिता सेंड मी whatever you have done. एक और बार होगा ना आकिब, देखिए जरा, है ना? उसको भी कर लीजिए. ठीक है. ओके सर. ऋषिता नहीं हुआ अभी तक. I'm sending it, sir. अच्छा. ये नीचे क्या स्ट्रक्चर है ऋषिता? यार ऋषिता, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन, कैमरास ऑन. यार ऋषिता, ये नीचे आपने ऐसे रिंग को क्यों तोड़ दिया? हमको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करना चाह रहे हैं. Sir, हाँ ऋषिता. I thought you wanted us to write it like that. नहीं, तो हमने तो ये लिखा है ना, फिर तो बार बार हम आपको वही कह रहे हैं यार, इसको तो आप इसको तोड़ क्यों दे रहे हो? यू फोकस हियर, यू हैव टू. आप स्ट्रक्चर वही बनाएंगे लेकिन आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए. यू आई एम सेइंग यू विल नॉट डिस्टर्ब दिस पार्ट. ये पार्ट तो वैसे ही रहना चाहिए. ये पार्ट तो ऐसे ही रहना चाहिए ना कि इसको तोड़ देना चाहिए. ऐसा ही रहना चाहिए सर. अब बनाइए, फिर बनाइए, तुरंत बनाइए, भेजिए हमको. जस्ट नीड टू शिफ्ट द डबल बॉन्ड देयर यार. आपको देखना, ये तो दिख रहा होगा ना, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है बस यहाँ पे. जल्दी बनाइए. सेंड इट क्विकली. यू सेंडिंग रशिता. अच्छा ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम. हम ना इंस्टेड ना कि आप फॉरवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, उसको आप फिर करेक्ट करके भेजिए ना. और दूसरा रिश्ता, थोड़ा ना आप एक और चीज, थोड़ा सीरियसनेस लाइए इस चीज में. लाइक सी द स्ट्रक्चर दैट यू हैव मेड ना. द स्ट्रक्चर, इज इट एज इट इज आई हैव मेड?
है ना। तो ये सारी चीजें प्लीज इसको ना ध्यान दीजिए, ठीक है। वो गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। ऐसे CH2 कहीं और नहीं रहेगा। नहीं नहीं यार रिशिता, मतलब हमको समझ ही नहीं आ रहा। आप पाई बॉन्ड पे यहाँ पे क्यों नहीं ला रहे हैं इस एरिया में, एरो जो हमने दिया हुआ है। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं हम रिशिता, ये सुनो टेल मी। So, but I put the double bond there. तो ये वाला ये यहाँ क्यों चेंज कर दिया आपने, ये क्यों चेंज कर दिया आपने। So, वो तो यही यहाँ जो चेंज होना है इस 3 कार्बन के बीच में होगा ना, है ना। वेनेवर तो ये यहाँ इतना आगे पीछे आपने और ये पढ़ा है क्या स्कूल में। नहीं सर। नहीं पढ़ा ना, ठीक है। फिर ऐसी गलती आप क्यों, हो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या, क्यों गलती हो रही है आपसे बार बार। जब मतलब हम स्पेसिफाई भी कर दे रहे हैं कि आपको बस इन 3 कार्बन एटम्स के बीच में रहना है, उसके बाद भी आप फिर से बनाइए, फिर से कीजिए।